Good morning, everyone, and welcome to my channel. Today, we are going to read chapter number 12 of CSMOP. So, here we begin. It says monitoring of timely disposal. इस तरीके से हम जो है timely disposal को monitor कर सकते हैं. This chapter is all about that. पढ़ लेते हैं. The primary responsibility for expeditious disposal of work, timely submission of care and disposal statements rests with the section officer object desk functionary concerned. यहाँ आपका सबसे पहले इंपॉर्टेंट दैट इज द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एक्सपीडिएट डिस्पोजल ऑफ वर्क एंड टाइमली सबमिशन ऑफ एरियर एंड डिस्पोजल स्टेटमेंट्स जस्ट विद दिस सेक्शन ऑफिसर दैट मींस इसका सबसे प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और द डेस्क ऑफिसर डेस्क फंक्शन कंसर्न ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है फॉर एक्सपीडिएट for expeditious disposal of work, right? To this end, he will inspect the sections register and assistant officer register and take such other action as may be necessary to ensure that no paper or file has been overlooked. Branch of officer will also keep a close watch on the progress of work in his control. ठीक है? Branch officer सबसे primary तो responsibility हो गया section officer की. Then the branch officer also will keep a close watch. Okay. Now necessary MIS reports are available in file to monitor the progress of work. अब यहाँ पर एक ये आता है MIS रिपोर्ट क्या होती है चेक कर लेते MIS reports means management information system, and that's an umbrella term to describe a set of reports that give a view of the day-to-day activities of a business which allows your business function to be analyzed. MIS का मतलब हो गया आपका मैनेजमेंट इन्फो ठीक है that's basically your uh, set of reports that give day-to-day activities report about day-to-day activity. All right. ये कहते हैं timely limits for disposal of cases. Now, what are the time limits for disposing of the cases? It says time limits will be fixed um, for disposal of as many types of cases as possible handled in the department through departmental. ठीक है कहते हैं आपका टाइम लिमिट जो है दैट विल बी फिक्स्ड फॉर डिस्पोजल एज मेनी टाइप्स ऑफ केसेस हैंडल्ड द डिपार्टमेंट थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन कैसे होगा थ्रू डिपार्टमेंटल इंस्ट्रक्शन जो है टाइम लिमिट्स सेट किया जाएगा. As a general rule, no official shall keep a case pending for more than 7 working days unless higher limits have been prescribed. Important है that no official shall keep a case pending for more than 7 working days unless higher limits have been prescribed for a specific type of cases through departmental instruction. Okay? ज़्यादा से ज़्यादा जो है आप 7 days तक जो है आपको केस को डिस्पोज ऑफ करना होता है. In the situation of a case remaining with an official for more than stipulated time limit, an explanation for keeping it pending shall be recorded on the note portion by him. Okay? Case अगर कोई भी जो आपके पास it is remains more than the stipulated time तो आपको क्या करना है आपको नोट के अंदर मेंशन कर देना है ये बात. ठीक है case remaining a case remaining with an official than stipulated time limit then an explanation for keeping pending shall be recorded. Okay? And you have an pending shall be recorded on the note portion by him. The system of exception reporting will be introduced to monitor the disposal of the system of exception reporting. Okay, will be introduced to monitor the disposal of receipts.
तो बात करते हैं मॉनिटरिंग ऑफ डिस्पोजल ऑफ रिसीट्स की। द वॉच ऑन डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन रिसीट्स, रिसीट फ्रॉम मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और वीआईपी, इनके लिए क्या क्या करना है आपका? तो द पर्सनल सेक्शन ऑफ ईच जॉइंट सेक्रेटरी डायरेक्टर, इफ द डायरेक्टर सबमिट्स केस डायरेक्टर टू सेक्रेटरी, विल मेंटेन अ सेपरेट रजिस्टर ऑफ कम्युनिकेशन मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। तो कौन कौन रखेंगे इस केस में? आपका पर्सनल सेक्शन ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी, the personal section of each joint secretary or director, they will maintain a separate register of communication from member of parliament or VIP reference जो है in the given format as this. The serial number at which a letter is entered in this will be prominently marked on the letter together with its date of registration. Example 1 to 5 oblique JS oblique MP oblique date like this. Okay? The serial number at which a letter is entered in this register विल बी प्रोमिनेंटली मार्क्ड ऑन द लेटर। तो आपको क्या है, आपको प्रोमिनेंटली मार्क करना है उसको, ठीक है। सीरियल नंबर जो है ना आपका, जो भी आपका रजिस्टर का नंबर चल रहा है एट विच लेटर इज एंटर्ड, वो आपको अपने रजिस्टर के अंदर एंट्री करके इस तरीके से, जहाँ एग्जाम्पल में दे रखा है आपको 1 to 5 ऑब्लिक, ये इस तरीके से JS पर्सनल MP करके और इस तरह से ऑब्लिक डेट करके दे देना है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टू कीप अ स्पेशल वॉच ऑन स्पीडी डिस्पोजल ऑफ कम्युनिकेशन Parliament. Each section will maintain a register as in a form of 12.2 and mark out prominently those communications finally disposed of by circling serial number in the register in the red ink. ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको रेड इंक के अंदर, ठीक है। इससे पहले क्या है, फॉर द स्पीड डिस्पोजल, ओके, और फॉर वीआईपी रेफरेंसेस आपको क्या करना है, एक आपको रजिस्टर मेंटेन करना है और उसको प्रोमिनेंटली जो है तो मार्क आउट कर लेना है प्रोमिनेंटली, फाइनली जो भी डिस्पोज ऑफ होता है बाय सर्कलिंग सीरियल नंबर इन द रजिस्टर इन द रेड इंक में आपको करके को मार्क कर देना। If for any reason an MP's letter is received by a section without being registered in joint secretary, registered there immediately, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके पास कोई लेटर आ गया डायरेक्टली, ठीक है, तो इसमें क्या करना है, कोई मान लीजिए कोई भी जो MP का जो लेटर है रिसीव बाय सेक्शन, तो क्या करना है, आपको तभी की तभी जो है जॉइंट सेक्रेटरी के पास जाके शुड बी रजिस्टर्ड देयर इमीडिएटली, ठीक है, जॉइंट सेक्रेटरी के ऑफिस में वो कर देना आपको। बोलता है ऑन द, बोलता है इसे, ऑन द फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ ईच मंथ ईच सेक्शन विल सबमिट द रजिस्टर अलॉन्ग विद द report in this to the under secretary deputy secretary. The report will with the remarks of to the director joint secretary and register will be written to the section. अब आपको क्या करना, on the very first day of every month, okay, ठीक है, वेरी फर्स्ट डे, ऑन द वेरी फर्स्ट वर्किंग डे पर of each month each section will submit a register. You will submit the register, okay, to the under secretary or to the deputy secretary, and they will, with the remark of this, they will report the remark and that will be submitted to joint secretary and register will be returned like this, okay। फर्स्ट डे को आपको ये जो रजिस्टर है, फर्स्ट वर्किंग डे जो है ऑफ ईच मंथ, हैव टू सबमिट दिस रजिस्टर under secretary or to the deputy secretary. They'll put some remarks into it and that will be submitted to the joint secretary, okay। Next move, the personal section of joint secretary will check whether all the communication entered in the register figure in the report sent by the section. तो जो भी पर्सनल सेक्शन है, जो भी आपका जॉइंट सेक्रेटरी का, दे विल चेक वेदर ऑल द कम्युनिकेशन जो है इस रजिस्टर के अंदर एंटर हुई है, figures in the report sent by sections. If any discrepancy is found, it shall be reconciled there, and thereafter the report will be submitted to the joint secretary for such other action as he may consider appropriate. Departments may, through department instruction, additional columns in the administrative list of VIP is available at 12.4. An file, okay, अब बोलता है कि वहाँ पर दे रखा है कि इस तरीके से आपको लिस्ट दे रखी है कि कौन कौन है, लिस्ट में जस्ट रीड आउट करके बताता हूँ कौन कौन है। दैट इज, देखिए, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, गवर्नर, फॉर्मर प्रेसिडेंट, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ इंडिया, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, स्पीकर ऑफ लोकसभा, कैबिनेट मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर, वाइस वाइस चेयरमैन नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, चीफ इलेक्शन कमिश्नर, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, मिनिस्टर ऑफ स्टेट यूनियन, देन वी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, चीफ हाई कोर्ट, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, और चीफ मिनिस्टर यूनियन टेरिटरीज, चेयरमैन, चेयरमैन जो है माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन, शेड्यूल
कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब कमीशन, चेयरमैन यूपीएससी, प्रेसिडेंट ऑफिस और प्राइम मिनिस्टर ऑफिस। तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से भी आता है, तो ये दैट्स ए वीआईपी रेफरेंस। ठीक है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट, गवर्नर, ठीक है, फॉर्मर फॉर्मर प्रेसिडेंट भी, डेप्यूटी प्राइम मिनिस्टर, चीफ ऑफ इंडिया, स्पीकर, कैबिनेट मिनिस्टर, वाइस चेयरमैन नीति आयोग, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट से भी आता है, तब भी चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर से आता है। देन वी हैव सीएजी, कोई भी लेटर आता है तो ये वीआईपी रेफरेंस है, मिनिस्टर ऑफ द स्टेट्स ऑफ द अटॉर्नी जनरल इंडिया, ठीक है। देन वी हैव चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, कैबिनेट मिनिस्टर, ठीक है, कैबिनेट मिनिस्टर इन द स्टेट्स और चीफ मिनिस्टर, एंड देन चेयरमैन माइनॉरिटी चेयरमैन आपका शेड्यूल, चेयरमैन वीआईपी रेफरेंसेस, ये लिस्ट आपको जो दे रखी है यहाँ पर। देन वी गो टू नेक्स्ट वन। In e-file, utmost importance has been given to the VIP cases. Three letter receipt from VIP is tagged with VIP tag and their detail are saved automatically. Mechanism for easy tracking and monitoring of VIP letters are also provided. Monitoring of court cases and implementation of court cases order. So the person section of the joint secretary letter, अब बात करते थे यहाँ पर था अभी तक आपका वीआईपी केसेस के रिगार्डिंग, ठीक है। अब जो बात हो रही है यहाँ पर हो रही है कोई भी मेंबर पार्लियामेंट या तो बिल, तो उसके बारे में था। अब यहाँ पर आगे आपका कोर्ट केसेस के बारे में क्या करना है आपको, ठीक है। बोलता द पर्सन सेक्शन जॉइंट सेक्रेटरी और डायरेक्टर ऑफ द डायरेक्टर टू द सेपरेट रजिस्टर ऑफ कोर्ट केस। तो कोर्ट केसेस का भी आपको जो है इन द पर्सनल सेक्शन, ठीक है, ऑफ द डायरेक्टर, डायरेक्टर को तब सबमिट करना है जब केसेस डायरेक्टर सेक्रेटरी को या एडिशनल को पुट अप करते हैं। तो पर्सनल वही पर्सनल सेक्शन ऑफ द जॉइंट सेक्रेटरी जो है दे विल मेंटेन ए सेपरेट रजिस्टर, ठीक है, ऑफ कोर्ट केसेस या कैट केसेस का फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग, फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग द पिटीशन, जिस दिन भी पिटीशन फाइल हो रही है, ठीक है, पब्लिक एप्लीकेशन इन अ कोर्ट केस cat, the form of appendix to the serial number at which a petition is entered in the register will be permanently marked on the petition application, ठीक है। भाई इस तरह से आपको एक रजिस्ट्रेशन नंबर दे देना है, इसके अंदर दिया है 12, ठीक है, 12 JS कोर्ट केस, कोर्ट पब्लिक कैट केस, डेट दे दिया along with this like this. So to keep a watch on the status of implementation of court cat or judges or order, each section will maintain a register as अब सेक्शन को भी यहाँ पर मेंटेन करना है, each section, ठीक है, they will maintain a register and mark out prominently those court case finally implemented in this by rounding a serial number, राउंडिंग ऑफ द सीरियल नंबर इन द रेड इंक। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रेड इंक में करना है ये आपको, ठीक है, रेड इंक में करना है आपको इन द डेट गिवन इन द इम्प्लीमेंटेशन कोर्ट केस ऑर्डर, ठीक है। इफ यू गिव एनी रीजन कोर्ट केस रिसीव्ड बाय सेक्शन विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड इन द पर्सन सेक्शन, तो क्या करना है, इमीडिएटली आपको जो है स्टेप्स विल बी टेकन टू गेट इट रजिस्टर्ड देयर, ठीक है। अगर मान लीजिए कोई रिसीव होगा डायरेक्टली आपके सेक्शन में विदाउट बीइंग रजिस्टर्ड, को जॉइंट सेक्रेटरी के पास इमीडिएट जाके उसको रजिस्टर कर देना है वहाँ, ठीक है। मैं बोलता हूँ वेरी फर्स्ट एंड 15th डे ऑफ ईच। देखिए वहाँ पर जो था आपके इस यहाँ पर क्या था, यहाँ पर सिर्फ फर्स्ट वर्किंग डे था, यहाँ पर फर्स्ट वर्किंग डे, फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ एवरी मंथ। यहाँ पर कोर्ट केसेस में क्या है आपका, कहता है ऑन द वेरी फर्स्ट एंड 15th डे ऑफ ईच, 2 दिन बोलते हैं आपको, दैट इज फर्स्ट एंड 15th of each month, each section will submit the register along with its report and to the under secretary, ठीक है, under secretary, जो भी आप रिमार्क देंगे that will be submitted to joint secretary, return to the section. The person section of the joint secretary will check whether all court cases entered in the register figure is report sent whether and discrepancy found, so it should be reconciled there. Thereafter the reports will be sent to the joint secretary for scrutiny. Permanent histories जो है may include additional column, ठीक है, अपनी तरफ डाल सकते हैं। रिक्वेस्ट रिसीव फ्रॉम अंडर आरटीआई, आरटीआई के अंडर में अगर आता है तो उस केस में आपको, तो वो कहते हैं यहाँ पर द रिक्वेस्ट एप्लीकेशन रिसीव अंडर आरटीआई एक्ट विल बी डेल्ट एंड मॉनिटर्ड विद इंक्लूडिंग ऑनलाइन बाय द एपीआईओ और पीआईओ और सीपीआईओ एंड एप्लीकेट अथॉरिटी एज पर रेलेवेंट इन दिस एक्ट। ये कहता है कि जो भी रिक्वेस्ट जो है जो भी एप्लीकेशन जो है रिसीव्ड अंडर द आरटीआई एक्ट विल बी डेल्ट विद मॉनिटर्ड इंक्लूडिंग ऑनलाइन, ठीक है, द्वारा की जाएगी डन बाय द एपीओ पीआईओ, देन पीआईओ, देन सीपीआईओ एंड द एपेलेट अथॉरिटी, एज पर द, आपको मतलब चारों को जो है यहाँ पर करना है।
रजिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री एश्योरेंस, अगर कोई पार्लियामेंट्री एश्योरेंस कोई बात आती है तो अटमोस्ट प्रायोरिटी का हो जाता है एकदम, राइट। क्या करना बोलता है, ईच सेक्शन ऑफ मिनिस्ट्री विल कीप अ रिकॉर्ड इन द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स 2.7 ऑफ एश्योरेंसेज गिवन बाय मिनिस्टर टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, ठीक है। जो भी एश्योरेंसेज जो है दे विल ईच सेक्शन विल कीप अ रिकॉर्ड द फॉर्म ऑफ अपेंडिक्स, जो भी एश्योरेंसेज जो है गिवन बाय अ मिनिस्टर टू ईदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट वेदर इन रिप्लाइज टू योर क्वेश्चन और इन कोर्स ऑफ डिस्कशन, ठीक है। तो या तो ये मिनिस्टर जो है इनका रिप्लाई कर रहे हैं किसी क्वेश्चन का, या फिर इन द कोर्स ऑफ डिस्कशंस में ऑन बिल्स या रेजोल्यूशन पर भी कॉलिंग अटेंशन नोटिसेस मोशन एटसेट्रा। अ सेपरेट रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड फॉर ईच हाउस, एंट्रीज देयर विल बी मेड सेशन वाइज, ठीक है। क्योंकि वहां पर जो है आपको क्या करना है, एक सेपरेट रजिस्टर बनेगा इस केस में, ठीक है। अ सेपरेट रजिस्टर विल बी मेंटेन्ड फॉर ईच हाउस, ठीक है। और एंट्रीज जो है वो मेड सेशन वाइज होंगी, जो भी एंट्रीज होंगी ना दैट विल बी मेड सेशन वाइज। सेक्शन ऑफिसर क्या करेगा, विल स्क्रूटनाइज द रजिस्टर्स वंस अ वीक। अब सेक्शन ऑफिसर का कुछ काम है तो वो कम से कम रजिस्टर वंस अ वीक, हफ्ते में एक बार जो है चेक करेंगे, ठीक है। तो देखिए इंपॉर्टेंट यहीं से पता चल जाता है कि पहले जो है कोर्ट केस हमारे लिए इंपॉर्टेंट था, उसको फर्स्ट और 15th डे हुआ। तो पहले हमारे पास वीआईपी रेफरेंस, इसको महीने में एक बार फर्स्ट वर्किंग डे को आपको पुटअप करना है। यहाँ पर जो है आपका कोर्ट केसेस जो है आपको फर्स्ट और 15th डे के अंदर पुटअप करना है। पार्लियामेंट्री एश्योरेंस जो है आरटीए तो आपको वो करनी है मेंटेन, और पार्लियामेंट्री एश्योरेंस जो आपको एक वीक के अंदर जो है एसओ स्क्रूटनाइज करेंगे। सिमिलरली वीआईपी रेफरेंस को भी आपको 7 days के अंदर अंदर डिस्पोज ऑफ करना था, राइट। तो एंश्योर द नेसेसरी फॉलो अप एक्शन इज इन फैक्ट बीइंग टेकन, सबमिट द रजिस्टर, ठीक है। इसके अलावा क्या करेंगे, सबमिट द रजिस्टर टू द ब्रांच ऑफिसर एवरी फोर्टनाइट, एवरी फोर्टनाइट मतलब हर एक 15 दिन के अंदर अंदर जो है आप उसको करेंगे to the branch officer. If the house concerned is in session, then and once a month otherwise. If the house is in session, तो आपको करना है and once a month otherwise, ठीक है। मतलब अदरवाइज जो है आपको एक महीने में, अगर सेशन में है तो आपको 15 दिन में करना है, अदरवाइज 1 month में। Drawing special attention to the assurance which are not likely to be implemented within a period of 3 months, जो कि 3 महीने के अंदर अंदर नहीं कर सकते, वो आपको बता देना है उनको, ठीक है। Drawing his special attention to the insurance which are not likely to be implemented within a period of, ठीक है। So the branch officer will keep the higher officer and minister informed of the progress made in the implementation by him in the parliament case. तो branch officer वो क्या करेगा, keep his higher officer and minister informed about it. Cases there is likely to be any delay in the implementation of a promise, reportedly will be brought to the notice well in advance, ठीक है। आपका होता है इन ई फाइल फैसिलिटी फॉर टैगिंग पार्लियामेंट्री एश्योरेंस मैटर्स इन जनरेशन ऑफ माइस रिपोर्ट is given there. Okay, about the checklist for periodical reports. To ensure timely report receipt, preparation and dispatch of periodical reports, each section will maintain two checklists, one for incoming receipt। तो आपको ये बताया कि यहाँ पर आपको जो है each section की अगर बात करें हम, they will maintain two checklists। okay, कौन section will maintain two checklists, one for incoming report, the other for outgoing report, in the form of appendix this. All periodical reports will be listed in the column 2 of the appropriate order, the frequency being entered, reports and so on, okay। So there has to be some periodical report होनी चाहिए अपनी तरफ से to ensure timely receipt, preparation and dispatch of periodical reports जो भी आप भेजते हैं। each section will be in two checklists, one for incoming reports and the other for outgoing reports, form of appendices 12.8 and 12.9 respectively. All periodical reports listed in column 2 of the appropriate checklist, order in order of their frequency, weekly entered first, fortnightly reports next, and like this। I would like to read this again, but that to ensure timely receipt and dispatch of periodical reports, periodical reports की बात कर रहे हैं, ठीक है। check for their periodical report, periodical reports के बारे में आपको क्या करना है, आपको अपने क्या करना है, तो दो बनाएंगे आप। You will maintain two checklists, incoming report, outgoing report, okay, and the form of this, all periodical reports will be listed in the column 2 of the checklist in order their frequency, weekly reports being entered first। तो weekly report जो है ना उनको पहले करेंगे, then fortnightly and reports and next on।
The checklist will be prepared at the commencement of each year. कब बनेगी ये वाली? At the commencement of the each year. Approved by section officer. Uh, approved by the branch officer. The section officer will go through the checklist once a week. Section officer, he will, what he will do? He will go through the checklists once a week, plan action on items requiring attention during the following week also. After a periodical report has been received or dispatched, the relevant entry in the date column of the appropriate checklist will be circled in रेडिंग. ठीक है, जो भी है जो इसको आप रेडिंग से फिर आप इसको मार्क कर देंगे. The periodical report has been received or dispatched, the relevant entry column of the रेडिंग में रंग. ठीक है, और इसके अलावा रिव्यू ऑफ पीरियोडिकल रिपोर्ट्स फॉर रिटर्न. अब इसका रिव्यू कैसे करना है? तथा ऑल पीरियोडिकल रिपोर्ट्स एंड रिटर्न्स रिलेटेड टू ईच रिव्यू रिव्यूड बाय. अगर हम बात करते हैं रिव्यू रिव्यूड at the level of joint secretary or above, every 3 years, हर एक 3 साल में जो है इनको to eliminate unnecessary reports and returns, to redesign report and return, do not provide information, rationalize simplification by combining two of them, to revise the frequency and to time required for collection from levels. The result of the review during the year will be reported by the section designated work of IWS by 7. The result of the review, periodical report जो जा रही है इनका review जो है बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है ये लाइन. The result of the review during each year will be reported by the section designated work of IWSU. IWSU by the 7th of April. 7th of April दे देना है आपको. ठीक है, IWSU को by 7th of April. अब आपसे पूछिए IWSU है क्या, पता है या भूल गए इसको भी? ये भी थोड़ा कम याद है इसके बाद, बट इतना पता है इंटरनल वर्क स्टाफ यूनिट करके कुछ है शायद, तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की तरफ से होता है ये. ठीक है, और ये आपका काम करता है, काम है इसे उनके बारे में कुछ पॉलिसी वगैरह बनाने के लिए IWSU. थोड़ा थोड़ा. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं आपका चलिए, बोलते हैं the section designated for handling of IWS will consolidate various section and send report recovering the ministry department as a whole and to the department of homes by 30th of April. ठीक है, तो ये जो IWSU है, जो भी सेक्शन है, जैसे जो भी डेजिग्नेशन, जो भी सेक्शन है designated for handling work of IWSU, they will consolidate the report. Okay, various section and send a report covering this, and they will send a report to the DRPG को भेजेंगे by the 30th of April as per this. 30 अप्रैल को जो है वो भेज देंगे. 7th अप्रैल तक आपको भेज देनी है periodical reports and returns related with this for years. The results of review during each year report by the section IWSU को भेज देंगे 7 अप्रैल तक, और फिर 7 अप्रैल के बाद जो है वो जो सेक्शन है वो आपको 30 अप्रैल तक वहाँ तक भेज. द मॉनिटरिंग ऑफ वेबसाइट्स, all central government ministries or office PSUs should have a website complies with the guidelines of India websites, uh, guidelines of government of India websites will, and Department of Admin nodal officer should be appointed for the purpose of the site updated regularly. ठीक है, हमारा जो वेबसाइट का जो काम करता है वो बेसिकली आता है, दैट इज मीटी के अंडर में गाइडलाइंस दे रखी है आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वेबसाइट. दीज आर अवेलेबल ऑन द वेबसाइट्स ऑफ दिस एंड DRPG. नेक्स्ट बोलता है आपका डिस्पोजल ऑफ पेंडिंग मैटर.
with the objective of disposing of reference from member of parliament, state government, parliamentary issue, then grievances and reference concern the department of advocating the current politics campaign covering all ministries, government of India, their attached subordinate office. Okay, such campaign was run successfully. The DRP Note Department from okay, as a sequel to the month-long special campaign. Okay, Ministry Department will undertake the action on regular basis, pending matters to the minimum possible. Dedicate 3 hours every week to the campaign. इस तरीके से कि यहाँ पे इन्होंने लिख लीजिए इसको, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है इसके अंदर हम वो लिख लेते हैं, ठीक है। अगर हम बात करें तो चलो पेंडिंग मैटर्स की, हमारा हेडिंग हो गया है पेंडिंग मैटर। क्या करना विद ऑब्जेक्टिव क्या member of parliament, state government, parliamentary prevention and from inter department of advocating क्या किया है DARPG एक कैंपेन स्टार्ट किया था आपका फ्रॉम 22 से 31 2021 में, ठीक है। अब इसका सीक्वल टू द मंथ वाइज मंथ स्पेशल डिपार्टमेंट जो है उनको रेगुलर बेसिस पे रिड्यूस करना पॉसिबल, ठीक है। उन्होंने वो निकाला है कि आपको क्या करना है, कम से कम डेडिकेट 3 hours एवरी वीक फॉर स्पेशल कैंपेन। तरफ से उन्होंने कुछ गाइडलाइन दी है, कम से कम आप क्या करिए डेडिकेट आवर्स एवरी वीक, आपको एवरी वीक जो डेडिकेट करने हैं 3 hours फॉर स्पेशल कैंपेन। ठीक है, इसके अलावा जो है फिर आपको डेजिग्नेट करना है नोडल ऑफिसर नॉट बिलो द रैंक ऑफ जॉइंट सेक्रेटरी विल बी रिस्पांसिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन बेस एंड टू गेट द डेटा एंटर्ड ऑन डीआरपीजी। इसके अलावा क्या करना है आपको, एक नोडल ऑफिसर को अपॉइंट करना है, जो जॉइंट सेक्रेटरी रैंक के होंगे, ठीक है। रिस्पांसिबल फॉर आइडेंटिफिकेशन मॉनिटरिंग, जो कि मॉनिटर करेंगे इन सब को, ठीक है। ये डेटा जो है डीआरपीजी फर्स्ट डे ऑफ फरवरी, फिर सेक्रेटरी सेल मॉनिटर, जो सेक्रेटरी हो क्या करेंगे मॉनिटर the campaign shall be will also be implemented in all out session चलेगा। हमारे पास ये कुछ अपेंडिक्स दे रखी है पीआईपी की रेफरेंस की लिस्ट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, और देख लीजिएगा इसको, राइट। कुछ अपेंडिक्स दे रखे हैं
Right. With this, thank you so much and have a great day.